4.0 industrial, along with the emerging technologies, are spurring the development of new production techniques and business models. So we come to new production paradigm, and to face this new production paradigm, if you don't want to face the disruption, so a country should formulate the strategy. How they formulate the strategy? First, you need to identify the factors, the condition in every country, and those of these, the condition and the factors, will be the measure for readiness to face the 4.0 industry. And these all will be used to formulate the strategy. Two different components to be considered in measure the readiness of each country. The first one is structure of production. For this component, there are two indicators. The first one is complexity. It's complexity about the mix and uniqueness of product can make as a result of the amount of useful knowledge embedded in the economy and the ways in which this knowledge is combined. And the second indicator of structure of production is scale. So scale is about both the total volume of manufacturing within a country, we know also as manufacturing value added, as well as the significance of manufacturing to the economy. This is the first component. And the second component is the drivers of production. They use 6 indicators in measure the drivers of production. The first one is technology and innovation. Again, we repeat as Mr. Shri Shiv Jaipuria explained before, the technology, the importance of the technology in this day. The technology and innovation, it's about a country has an advanced, secure and connected ICT infrastructure to support the adoption of new technologies in a production. And it is also about country's ability to foster the innovation and to commercialize the innovation. And the second indicators, human capital. I think this is the most important as we facing globalization. We in Indonesia, in Southeast Asia, we already open to each other, 10 countries, in all aspects, in economy, in human capital, in everything. And in the next few years, we'll come to globalization. So Indonesia is not just open to all members of Southeast Asian countries, but also with other countries around the world, including India, of course. There are 6 indicators. And the third one is global trade and investment, and as we are facing the globalization. And the fourth one is institutional framework, and then sustainable resources, and the sixth one, the last one, is demand environment. So this is 6 indicators for drivers of production, and based on the report, and these indicators is required by India to go forward to solve the problem of disrupting, to face the 4.0 industry. So based these components, they group 100
countries around the world into two groups. The first one is leading countries. It's only 25 countries, only 7 from Asia. Indonesia, India are not included there. Only 7 from Asia. And this group, they have characterized with strong production base today that exhibit a high level of readiness for the future. And also, they have the most common economic value at stake for future disruption. This is the leading countries, 25 countries. Comes in the second is legacy continues. Congratulations to India because India is including in this second group, legacy countries. But we should be very careful because this group is good in this phase. This country, strong production base today. So strong production base today, but they are at risk for the future due to the weaker performance of drivers of production component, the 6 indicators. But this is what Economic Forum says. Of course, it will be different. Says by Shri Shiv Pratap Shukla. We will hear later. Okay. And the third group, it is high potential. In this group, only 7 countries. Even in this group, Indonesia is not included. So this group is limited production base today. That score well across the drivers. They are limited today, but they have the hope in the future because they are good in drivers of production. And the last one is nascent countries. Indonesia is including in this last one. It consists of 58 countries. So limited today and still risky for the future. This is 58 countries. For India, the study says that India group our government's priority to sectors, 5 sectors, 5 industrial sectors. And if I compare to India, we are same in automotive and textile. So we will compete in these 2 sectors. And we have 10 policies. Government already formulated 10 policies. And the first one is improve the flow of goods and material, optimizing industrial zone, accommodate sustainability standard, empowering small and medium enterprise, just like India. And then building a national digital infrastructure. We are moving now to 5G. And attract foreign investment, of course. Improve the quality of human resources, preparing pilot innovation, providing incentive, and the last one is harmonizing the rules and policies to support 4.0 industry. That's all. Hope that what I shared to you is useful, and thank you. वित्त राज्य मंत्री बड़े भाई आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी, जयपुरिया ग्रुप के चेयरमैन और देश के जाने माने उद्योगपति और शिक्षाविद आदरणीय श्री शिव जयपुरिया जी, हमारी विदेश से आई हुई अतिथि और डायरेक्टर, विभिन्न संस्थानों से उपस्थित डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी अतुल जैन जी, हमारे संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि गुलशन भामरी जी,
देश के कर्णधार और भावी मैनेजर्स, आज के परिप्रेक्ष्य में जो संस्थान ने सेमिनार रखा है, निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सेमिनार से, जैसा कि मैं भी बहुत ध्यान से मैडम की बात सुन रहा था कि किस तरह से दूसरे देश और भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अभी मैडम एक बात बीच में बोल रही थी कि कुछ जो ग्रुप्स हैं उनमें भारत सम्मिलित हुआ है, कुछ में होना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं होगा जो भारत के हित में हो और भारत उसमें ना हो। जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इस समय देश में है, वो देश के आर्थिक विकास के लिए पूरी तरह से तत्पर है और माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी प्रकार के, चाहे वो कितने डिफिकल्ट डिसीजन हो, वो कभी ये बात सोचते नहीं कि इसका पॉलिटिकल फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन बहुत लंबी और दूरदृष्टता के साथ वो अपने डिसीजन लेते रहते हैं। कुछ समय में बीच में लोगों को लगा भी कि साहब बहुत अस्थिरता है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, लेकिन उन्होंने जो अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई, पिछले लगभग 1 माह में जिस तरह से हर चीज के प्राइस कंट्रोल हुए हैं, वो उनकी दूरदर्शिता का ही एक रिजल्ट है। हम लोग आर्थिक मोर्चे पर जितने भी और डिफिकल्ट डिसीजन हो सकते हैं जरूर लेंगे, लेकिन देश के हर नागरिक का, देश के हर व्यक्ति का, जो कि प्रधानमंत्री जी जैसा कहते हैं कि आखिरी पायदान पे जो देश का नागरिक खड़ा है, उसके भी हित की बात हम लोग जरूर सोचते हैं और उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए सारे निर्णय हम लोग करते हैं। आज भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान बनी है, वो आप सब लोग सहज ही महसूस करते होंगे और जो कठिन परिश्रम माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है और हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल की तरह उनका रहता है कार्यक्रम। मैं भी हॉल में जब घुसा तो सामने स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत बढ़िया उन्होंने जो कहा वो लिखा हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हालांकि आप सबने पढ़ा होगा। Take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea, let the brain muscles। तो ये एक सेंटेंस ऐसा है कि हम लोग जो भी यहाँ मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डिफरेंट हम लोग स्पेशलाइजेशन चुनते हैं और फिर उसी पे अपना अगर फोकस कर लें, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी कर लें, तो निश्चित जान लीजिए कि आपको सफलता की ऊंचाइयों पे ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। होता क्या